Good morning students. Today we are going to fill the chapter number 32 that is the highest civilian awards. ये एक ऑनर होता है जो कंट्रीज हर एक कंट्रीज अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस जिनका होता है किसी भी फील्ड में उन्हें अवार्ड किया जाता है. कुछ कंट्रीज हैं जो अवार्ड देते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स. वी आर गोइंग टू फिल इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिया का. इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज द भारत रत्न and it is the highest civilian award of the Republic of India and it was instituted on 22nd Jan 1954. The award is conferred in recognition of exceptional service performance of the highest order without distinction of race, occupation, position or sex, and it is treated on a different footing from Padma Award. It is also given for exceptional services towards advancement of art, literature and science and in recognition of public service of the highest order. It is also not mandatory that Bharat Ratna be awarded every year. ये जरूरी नहीं कि हर एक ईयर भारत रत्न अवार्ड किया जाए. So let us see one by one कि हर एक कंट्रीज का कौन कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं. So the first one that is the इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है दैट इज द भारत रत्न. सो यू विल फिल इट हियर BHARAT भारत रत्न RATNA भारत रत्न. सेकेंड इट इज कुवैत. कुवैत का जो हाईएस्ट हमारा सिविलियन अवार्ड्स है दैट इज द मुबारक अली कबीर मेडल. सो यू विल फिल इट हियर MUBARAK मुबारक ALL कबीर KABIR कबीर मेडल MEDAL कबीर मेडल. नेक्स्ट कम्स द डेनमार्क. डेनमार्क का जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डायना ब्रॉग. सो वी विल फिल इट हियर ऑर्डर ORDER ऑर्डर ऑफ DIANA डायना ब्रॉग BROG. नेक्स्ट कम्स दी सऊदी अरब. सऊदी अरब का है शाह अब्दुल अजीज मेडल. सो यू विल फिल इट हियर शाह SHAH शाह अब्दुल DUL अजीज AZIZ अजीज मेडल MEDAL अजीज मेडल. नेक्स्ट कम्स द कंट्री दैट इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना का जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ सोना मार्टिन. सो यू विल राइट हियर दी ऑर्डर ORDER ऑर्डर ऑफ सोना मार्टिन SONA सोना मार्टिन MARTIN सोना मार्टिन. नेक्स्ट कम्स द अमेरिका that is the Presidential Medal of Freedom. So you will write here Presidential 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 Medal 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 of Freedom FREEDOM Freedom. Next the country that is the Germany. जर्मनी का क्या है पोरली मेरिट आयरन क्रॉस. सो दैट अवार्ड नेम इज PORE पोर LEEE ली मेरिट MERIT मेरिट आयरन IRON आयरन क्रॉस CROSS क्रॉस. एट्थ इट इज नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स का क्या है नीदरलैंड्स लायन. सो यू विल फिल इट NETHER Netherlands LANDS lands lion LION. Hungary, that is the honor which is that here the order of banner. So you will write here the order 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 of banner BANNER banner. नेक्स्ट कम्स दी वियतनाम. वियतनाम क्या क्या है दी ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार. सो यू विल राइट हियर दी ऑर्डर ORDER order of the
golden star, GOLDEN, golden star, STAR, golden star. अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का क्या होता है. पाकिस्तान का होता है निशान ए पाकिस्तान. सो यू विल राइट हियर NISHAN, निशान ए पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान. ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है, इसका क्या है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, member, MEMBER, member of British, BRITIS, British Empire, EMPIRE, British Empire. Next it is France. France का क्या है आपका, legend of honor, LEGEND, legend, OF of honor, HONOUR, legend of honor. 14th it is Japan. Japan का क्या है, order of Malvin's son. So you will write here ORDER, order, OF of MOVLOVNICE, order of Malvin's son, SUN, son. Next it is, the country name is Nicaragua. So the order here or honor it is here, National Orders of Meritocracy. So you will write here National, NATIONAL, National Order, 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 OF of Merito, 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 D communers, COMUNERSE. So you will fill this chapter. The next chapter is chapter number 33. The chapter number 33, that is wonderful architecture. There are many wonderful building and architecture in the world. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए कंट्रीज के, आपको बताना है कि वो कहाँ आर्किटेक्चर लोकेटेड है. सो द फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, एंड इट इज फुल ऑफ ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स दैट क्वालिफाई अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंप्रेसिव वर्क्स ऑफ आर्किटेक्चर. सो विच कंट्री इट इज, UK. सो यू विल राइट हियर UK. Next picture you can see, that is Eiffel Tower is the wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. The tower is 324 meters and 1063 feet tall. So where it is, and this is its strong and impressively thick and high wall soar up from the waters of the river Lee. So which place it is? Eiffel Tower कहाँ है? France. So you will write here France, France. Next picture you can see, it is a Jane's Graviton Steam and Old Town. तो ये कहाँ पे है? बेल्जियम. So you will write here BELGIUM, बेल्जियम. नेक्स्ट ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सभी को पता होगा, दिस इज द क्रेमलिन एंड रेड स्क्वायर मॉस्को, and right in the middle of the old town of Janes, rising above the rooftops of the surrounding streets. कहाँ है ये? रशिया. Yes, RUSSIA, Russia. Next it is Berlin's Brandenburg Gate, and modeled on the Acropolis in Athens and built for King Frederick William II in 1791. The monument sandstone Brandenburg Gate in where it is Berlin's Mittel district was the city's first neoclassical structure. ये जो गेट है neoclassical structure है. So where it is? In Germany. GERMANY, Germany. Next picture you can see, this is a temple. It is the most scared in the country, and once inside the complex, we were overcome with a dazzling array of meaning temples, people praying, families having picnics, and monks in a rainbow of colored robes. Where it is? Myanmar. So you will write here MYANMAR,
M-A-R, Myanmar. The last one figure you can see here, it is, what is that? It is Dubai has recently attracted world attention through many innovative large construction projects and sports events. The city has become symbolic for its skyscrapers and high-rise buildings. Where it is? Yes, UAE. UAE. That is United Arab Emirates. So, you will fill this chapter also. The next chapter which we are going to fill is the chapter number 34, that is the national anthems. जिस तरीके से इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, उसी तरीके से बाकी कंट्रीज के भी हैं. लेट अस सी वन बाय वन. वी आर गोइंग टू मैच विद द कंट्रीज टू देयर नेशनल एंथम. फर्स्ट वन इट इज श्रीलंका. श्रीलंका का क्या नेशनल एंथम है? श्रीलंका मैथा. सो यू विल राइट इट डाउन हियर 1 नंबर. सेकेंड इट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान का क्या है? पाक सरजमीन शाहबाद. सो यू विल मार्क इट हियर 2 नंबर. थर्ड इट इज फ्रांस. फ्रांस का क्या है? दैट इज ला मार्सेलेसी. सो यू विल राइट इट डाउन हियर 3rd नंबर. फोर्थ इट इज भूटान. भूटान का क्या है? डर्क सेंदेन. सो यू विल राइट डाउन हियर 4th नंबर. फिफ्थ इट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर. So you will write it down here 5th number. Sixth it is Germany. Germany का क्या हो जाएगा? Das Land der Deutschland. So you will write it down here 6th number. Seventh it is Ireland. इसका क्या होता है? Let us see. Here it is given Amran na Bifian. So you will mark it here 7th number. 8th number it is Saudi Arab. So what is that? Ash Al Malik. So you will write it down here 8th number. 9th it is USA. USA का क्या है? Star Spangled Banner. So you will write it down here 9th number. Then 10th it is Nepal. Nepal का क्या है? Soyen Thongsfulka. So you will mark it here 10th number. 11th it is Indonesia. Indonesia का क्या हो जाएगा? It is Indonesia Raya. So you will mark it here 11th number. 12th it is Japan. Japan का क्या हो जाएगा? Kimi Go Yo. So you will write it down here 12th number. 13th it is Canada. Canada का क्या हो जाएगा? That is LO Canada. 13th number. Last it is UK. UK का क्या हो जाएगा? God Save the Queen. So it is 14th number. Now we are going to fill the next chapter, that is chapter number 37. Next it is Great Monarchs of World. इसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं ग्रेट मोनार्क्स के बारे में. आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है वो डिस्क्रिप्शंस किससे रिलेटेड है. सो द फर्स्ट वन इन दिस, ही वाज द Mongol emperor from 1260 to 1294 AD. He conquered China. His official state religion was Buddhism. Who was this? Kublai Khan. So you will fill it here. Kublai. Kublai Khan. Khan. Kublai Khan. Second it is, he ruled over Israel from 97 to 93 BC. He made a temple at Jerusalem whose remains are called the Wailing Wall. So that person name is King Solomon. K-I-N-G. King Solomon. S-O-L-O-M-O-N. King Solomon. Third number, he was an able and learned Roman emperor 10 BC to 54 AD. He conquered Britain in 43 AD. So that person name is Claudius. So you will write here C-L-A-U-D-I-U-S. Claudius. Fourth it is, he became the king of Macedonia, Greece in 33 BC. He wanted to conquer the world but could not go beyond India. So that person name is Alexander the Great. A-L-E-Z-X-A-N
D-E-R, Alexander. T-H-E-D, great. G-R-E-A-T, great. Fifth number, she became the Queen of England in 1837. During her reign, England progressed by leaps and bounds. That person name is Queen Victoria. Q-U-E-E-N, Queen Victoria. V-I-C-T-O-R-I-A, Queen Victoria. Sixth number, he was the King of Russia from 1682 to 1721. He attempted to transform Russia into a progressive country by introducing Western custom. That person name is Peter the Great. So you will write it down here. P-E-T-E-R, Peter. T-H-E, Peter the Great. G-R-E-A-T, Peter the Great. Seventh number, he became the King of Prussia in 1740 and transformed his empire from a small state in Germany to a major power. What is that? Frederick the Great. F-R-E-D-E-R-I-C-K, Frederick the, T-H-E-D, Great. G-R-E-A-T, Great. Eighth number, he was the Emperor of France from 1804 to 1815. He was a great French general emperor. So that person name is Napoleon. N-A. So what you have to do is, you will learn all the chapters and you will fill it in your book. That's all for today. Thank you.